Welcome to online education of New Satyam Catholic School. Chapter number 22, Transport and Communication. Means of transport. Hello students, how are you? I hope so you must be fine. Yes? And today we are going to start our study session with chapter number 22, Transport and Communication. So students, what is transport? Transport is a means by which we go from one place to another, or we can say we travel from one place to another. Okay, transport help us to travel long distance in less period of time. Yes, so in olden days, what are the transport facilities? What about modern days? Which transport facilities are there in modern days? Yes, so all these things we are going to study. Okay, students, so take out your textbook. On this page, you can see different means of transport. Yes, so students, from this it is very clear. From the picture, it is very clear that we are using different means of transport for moving from one place to another. We use different means and mode of transport at different times in history. The means of transport we use nowadays are faster and safer than the older one. So today we are using means of transport. Yes, different means we are using, but they are much safer than the older days. That is olden times. On the next page you can see how man used to transport in Stone Age period. You can see this picture. Students, let's see now what they are doing. Before starting transport system, we should know about invention of wheel. Man used to see a log of wood and round boulders rolling down mountain slope. It thought that these observations give him an idea of wheel. इसी से उनको wheel, that is पहिया जिसे हम कहते हैं, उसकी आइडिया उनके दिमाग में आई कि हम इसी तरह से अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट बनाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा. तो इसी तरह से व्हील की इन्वेंशन हुई. In olden days, plank of woods are used to transport object. Later, by attaching wheel to this plank, the speed of transport increased. Let's see. In olden days, plank of wood are used to transport object. Later, by attaching wheel of these planks, the speed of the transport increases. Time and efforts were saved, and the invention of wheel is important step in progress of mankind. Here you can see few animals are also given, that is picture of yak, camel and a palanquin. Can you see this? ये palanquin कहते हैं, इसे जिसे हम पालकी कहते हैं ना, ये है palanquin. और what about this? Camel. Yes, it is said to be a ship of desert. आप इसे desert region में पा सकते हैं. And what about this animal? This animal can be found in cold country, which we call as a yak. yak है ये. In cold countries जो काफ़ी strong होते हैं और transportation के लिए उनका use होता है. Even if modern means of transport have been invented in modern time, even if modern means of transport have been invented in modern time, in some part of the world, men and animal are still used for purpose of transportation. Yak are used in inaccessible part, camel in desert, palanquin or dolly in mountainous areas. Coming to the next page, water and
Wind are the substance. Water and wind are the substance that flow. Pipes are used to transport these substances. Water has been transported through pipes or canal since ancient time. It is safer to transport combustible substance like mineral oil, natural gases, etc. through pipe. Crude oil is transported from oil well to the refineries through pipe. Then similarly, after refining, it is transported through pipeline to the marketplace in some part. Kerosene, petrol, mineral oil, etc. They are also transported from one place to another by means of pipe. What is the reason? Because they are having the property of fluidity. That is means of communication. The means of communication you have seen. Phone. telephone. It was invented by Alexander Graham Bell. Graham Bell was born on 3rd March 1847 and died at Edinburgh, Scotland on 2nd August 1922. Radio. Radio was invented by Guglielmo Marconi. It brought a revolution in mass communication. Radio programs are broadcast to the whole world. Even illiterate people can listen and understand radio. Programs like music, discussion, drama, and commentary of important events or game. Do you know? Radio also help ship an aeroplane to send messages in emergency. Student, isn't it a wonderful invention Marconi has done? Television. So students, you all know na what is television? Television क्या है? It is TV on which you watch your cartoons, news, music, etc. Okay, so this is television. Let's know about television. Students, this set of television was invented by John Lowe Bird. In 1926, television is more effective than radio. It involves both the sense of hearing and seeing. Any awakening in any part of the world can be viewed in the comfort of our home. Do you know? India's emotional TV is called Doordarshan. Mobile phones. सेलुलर फोन. सबको पता है स्टूडेंट सेलुलर फ़ोन क्या होता है? यस, आपका मोबाइल फ़ोन. यस, इस कोरोना पीरियड में हम कितने दूर दूर रहते हैं पर हमें किसने पास लाया? इस फ़ोन ने. ठीक है, जिसके ज़रिए हम आप तक पहुंच सकते हैं. हाँ, हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस पीरियड these cell phones are very helpful for us. Now it is a mobile and portable device used by people to communicate with each other all over the world anytime and anywhere. So students, this is one of the merit that cellular phone can be used anytime and anywhere. That is, any part of the world you can use this cellular phone.
A hand mobile radio telephone is an old ring of radio engineering. Earlier procedures of cellular phone included analog radio communication from ships and trains. Martin Cooper is the first inventor of mobile phone and in large scale manufactured by Motorola Company in 1973. Which way of communication would you use to get the following information? Get help from the police after seeing an accident. Yes, students, after seeing an accident, you will naturally use your cell phone. You will just dial a number and call a police over here on the spot. Yes, so at this moment, cell phones are very helpful. It helps us whenever you are in difficulty. It brings the world closer to us. Within no minutes, just dialing a number. Okay? Computer. Invention of computer. Invention of computer. Charles Babbage. He was inventor and founder of computers. This great personality was born on 26 December 1791 and died on 18 October 1871. So students, he has made first computer. Yes, which can compute large calculation within no minute. Students, today's world is totally dependent on computer. We can send email, we can carry out our banking transaction. We can see computers in many places like scientific laboratory, research center. It has created his name in IT field, that is information technology. Newspaper. Next part is communication. Obtaining or sending various type of information is said to be communication. A few centuries ago, messages were sent by tying a letter to the foot of the pigeon. Communication. Communication is the process of sending and receiving messages. The messages can either be spoken or written. In olden time, messages were sent through pigeon, horse riders, or by signal. Do you know the sailor signaled to other ship about in the sea by waving a flag? Types of communication. In the present world, communication is of two types: personal communication and mass communication. Personal communication consists of mobile phone, laptop, computers, whereas mass communication comes under news, that is newspaper. Yes? Types of written communication: postal system, courier service, fax, internet. Postal system: post and telegraph services, letter, register letter, stamp envelope, postcard, parcel, telegram, airmail letters, and speedboat. These are the written source of communication. Let's see what is telegraph.
In 1837, Samuel Morse invented a system of sending messages by telegraph. The sender sends the messages through dot and dash symbol, and the operator, that is a receiver, receiving messages at other end translate these dot and dash symbols into the words. Okay, so in this manner, short messages could be sent from one place to another within no minutes. So this is also one of the type of communication system which is also present today. Yes, WhatsApp. Whatever it is there, it is easy for us to send through WhatsApp within no minute. Okay. Next, messages were also sent through runners. In later time, telegram and postal services come into use. All these methods were very slow as compared to the मॉडर्न मेथड्स. आप इस बात को मानते हैं? यस, ये सारे मेथड्स जो है वो स्लो प्रोसेसिंग मेथड्स है, बट अभी का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी फास्ट है. Nowadays, we have new technique of quick communication. Communication is now used in every field. With the help of media such as radio, television, internet, mobile phone, etc. We can easily communicate with several people at the same time. Man-made satellites are used for this purpose. Satellite communication. An artificial satellite is a man-made object which revolves around the earth. It helps in transmitting sounds and pictures through transmitter. A satellite acts as a bridge between the different countries of the world. Do you know an internet is connected through a satellite? Satellite is a device which gives signals to our TV channels. The news of the world and also of the space could be known by just sitting in one place, on your television set. We can come to know about the celestial body, that is any heavenly body, that is about the comet or meteor is there in the space. Yes, we could come to know about the eclipse. Eclipse means क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण. Okay, that is a timing. We can also come to know about the weather forecast. That is when will it rain and when when we are going to get a stormy weather. All these reports are given to us sitting in one place and by means of these TV channels. So without satellite, I think it is not possible for us to get all this information of the world. So they provide us much help to the scientists of our research center. It is really helpful for us to take images of a celestial body or our earth, moon, etc. from space. We could come to know about the physical features of the heavenly bodies. Plus, any forewarning from the weather reports help our fishermen to be safe from fishing. Students, it is very amazing that a wonderful invention has helped us a lot in progress of our country. Newspaper, periodical book, radios, television, internet, etc. are all means of mass communication. In the beginning, man uses gestures and facial expression. What is the meaning of gestures and facial expression? Facial expression. Gestures means कोई स्टाइल करना, जैसे ऐसे. It shows somebody is calling. हमें कोई बुला रहा है. It shows हमें
साइलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है. इट शोज यू हैव टू मेंटेन साइलेंस. ओके, नाउ फेशियल एक्सप्रेशन. अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देते थे, जैसे बड़ी बड़ी आंखें कर देना, स्माइल करना. ओके, तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस थे. तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी उनको कैसे है मैसेज मिल जाता था. Man uses gestures and facial expression and different kinds of sound to communicate. Later, different sound came to mean to different things. These lead to development of language. After the spoken language, man invented writing. Okay, after the invention of language, they started writing the letter. He began to carve his thoughts on the walls of the cave, a piece of wood, and communication began in this way in ancient time. Study the picture given here. Now compare your list with the form of entertainment shown here and see if they match. All these act entertain us. These are all local and live form of entertainment. We can see these artists in the person. Shahir, magic show, street play, puppet show, clown, mascot. We use the radio, TV, computers and projector. We enjoy the programs on these devices. These programs are performed somewhere far away. They are filmed and recorded there and then transmitted to us. We can see and hear the programs using the devices listed above, that is the TV, radio, etc. These are the means of entertainment that transmit programs. Yes, students. So, here one thing I would like to tell you, that is recently the use of mobile phone has increased. However, our beloved sparrow are disturbed by the waves coming from mobile phone, and that is why sparrows are disappearing from our environment. Yes, means of transport and communication are to be used as needed. Excess use of these means is harmful for us, for all living beings as well as for the environment. Information about mode of transport in different period of time. So we have learned different types of information and different modes of transport. Then the importance of invention of wheel, means of communication in different period of time, and live entertainment and means of transmission. So students, we have studied lot from this chapter. Okay, decide पिछली बार क्या हुआ था, आपको याद है ना? यस, चंद्रयान लॉन्च हुआ था. तो अब हम आपको कहाँ ले जाएंगे? चांद पर, क्योंकि रॉकेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन we people from earth into the space. Rocket moves up into the space against the gravity of the earth. It is only the fastest means of transport which our scientists have invented. Take us directly from the earth in space. 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड. दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं. We have a liftoff. We have a liftoff. A perfectly normal liftoff. S-200. दोस्तों, हमारा भारत देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद ही तेज गति से विकास कर रहा है. हम चांद पर अपना मिशन भेजने वाले चौथे देश बने, जिसने मून पर पानी के सबूत ढूंढने में नासा की काफी मदद की.
हमने बेहद ही कम कीमत पर मार्स पर अपना मिशन भेजा तथा हम पहली बार में ही मार्स पर सफल मिशन भेजने वाले पहले देश बने। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। पर इन सभी से एक कदम आगे बढ़कर भारत 2022 अंत तक अंतरिक्ष में अपना पहला मानव युक्त मिशन भेजने जा रहा है और आज हम इसी महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के बारे में। दोस्तों, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया कि भारत 2022 तक अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने जा रहा है, तो दुनिया भर के देश आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दुनिया में अब तक 3 ही देश ऐसे हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं तथा भारत इस मिशन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। हालांकि इसरो और हमारा भारत देश इससे पहले भी अपने मिशनों से दुनिया भर को चौंकाता रहा है, पर इस मिशन के बाद भारत न सिर्फ दुनिया भर को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएगा, पर साथ ही भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया भर के सबसे विकसित देशों के साथ जा खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। दोस्तों, इस स्पेस मिशन के अंतर्गत एक स्पेस मॉड्यूल को 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। ये सभी अंतरिक्ष यात्री क्रू मॉड्यूल में मौजूद होंगे, जिनके साथ एक सर्विस मॉड्यूल भी अटैच होगा। इन दोनों ही मॉड्यूल्स को मिलाकर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल बनेगा, जिसे भारत के सबसे एडवांस्ड रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के मात्र 16 मिनट के बाद सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। सभी अंतरिक्ष यात्री धरती से 300 से 400 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर धरती का चक्कर लगाएंगे। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तकरीबन 5 से 7 दिन बिताएंगे, जहां वे माइक्रोग्रेविटी और कई अन्य प्रयोग करेंगे, जिसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों का वापसी का सफर शुरू होगा। लौटते समय स्पेसक्राफ्ट की गति को धीरे धीरे कम किया जाएगा और पृथ्वी से 120 किलोमीटर की दूरी पर क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल एयर ब्रेक का इस्तेमाल कर अपनी स्पीड कम करेगा, जिसके बाद यह पैराशूट के जरिए गुजरात के पास अरब सागर में उतरेगा, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को रिसीव करने के लिए एक दल पहले से ही मौजूद होगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन की आधारशिला 2004 में रखी गई थी, पर अंतरिक्ष यान को लेकर शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से 2006 में शुरू किया गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में एक हफ्ता गुजारने लायक मर्करी क्लास अंतरिक्ष यान के समान कैप्सूल का डिजाइन तैयार किया जाना था। यह 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापस पानी में लैंड किए जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक इस डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और इसे भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए भेजा गया। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने तथा उन्हें ट्रेनिंग देने का काम जल्द ही जल्द शुरू किया जाएगा। सबसे पहले भारतीय वायुसेना और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से इसके क्रू को चुना जाएगा, जिसके बाद इन्हें 2 से 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए इसरो बेंगलुरु में सारी सुविधाओं से संपन्न एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है। हालांकि कम समय होने की वजह से देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस या अमेरिका से ही हो पाएगी। बेंगलुरु में बनने जा रहा यह ट्रेनिंग सेंटर देश के भविष्य के मानव मिशनों के लिए काफी कारगर साबित होगा। गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशनों को अंजाम देगा। पहला मानव रहित टेस्ट फ्लाइट इसरो 30 महीनों के अंदर लॉन्च करेगा, जिसके करीब 36 महीनों के बाद दूसरे टेस्ट फ्लाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके बाद अंततः भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन में कुल मिलाकर करीब 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा, जो कि दुनिया के किसी भी मानव मिशन से कम है। इस मिशन के तहत आने वाले करीब 3 सालों में 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनमें से करीब 900 लोगों को सीधे इसरो में नौकरी मिलेगी। 21 नवंबर 1963 को तुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही बच्चे के पहले कदमों की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार किए। आज हमारा भारत देश न सिर्फ दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करता है, पर साथ ही यह अपने रॉकेट की मदद से उन्हें अंतरिक्ष में भेजने का काम भी करता है। धन्यवाद दोस्तों।